Today I am Malik Narula of class 8th Rising Stars Convent School is going to do an experiment on atmospheric pressure, that is upside down the glass. Material that we need are one glass full of water and a piece of cardboard. Okay, now let's begin with our experiment. Firstly, we need a glass of water and a piece of cardboard. Now we will fill water in the glass. Now I had added some food color in the glass and I am stirring it. Put the cardboard at the top of the glass and now press it well like this. Keep your hand on the cardboard and turn the glass upside down. Slowly move away your hand and see the cardboard is still in its place. And now return the glass. This happens because the air pressure exerted on the cardboard from underneath is greater than the weight of the water inside the glass. Thank you, ma'am. गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हमारी इस एक्टिविटी का नाम है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन वाटर। सो हमारी इस एक्टिविटी के लिए हमने 4 चीज़ें ली हैं। सबसे पहले एक बॉटल, एक स्ट्रॉ, 1 ग्लास, एम्प्टी ग्लास एंड 1 बैलून फिल्ड विद एयर। सो हमारी इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने एक बॉटल ली जिसमें हमने एक छोटा सा होल किया। फिर उसके बाद हमने उसे हाफ भर किया है पानी से। फिर उसके बाद हम हमारा एक स्ट्रॉ लेंगे जो इस होल से इसे क्रॉस करके इसके अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने हमारा ग्लास लिया, फिर इसको ऐसे डाल दिया। फिर अब बारी आई हमारे इसको प्रेशर को दिखाने के लिए। सो हमने जो बैलून एयर से फिल किया था, फिर उसके बाद हम इसे बॉटल की टॉप पर लगा देंगे। देखिए, जैसे जैसे इसमें ये एयर जाएगा वैसे वैसे ही हमारा ग्लास फिल होता जाएगा। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे कि ये वाटर एयर को प्रेशर ले लेता है। हम आपको ये दोबारा से दिखाएंगे। जैसे कि हमने एक स्ट्रॉ लिया जो कि एक होल में डाल दिया, फिर हम ये वाटर दोबारा से इसमें डाल के आपको दोबारा दिखाएंगे। फिर हमने ये स्ट्रॉ इसको फिर से इसके अंदर से डाला, फिर हमने एक ग्लास, एम्प्टी ग्लास दोबारा से लिया, इसके अंदर डाल दिया। फिर हम ये बैलून फिर से लेंगे इसका प्रेशर दिखाने के लिए। जैसे जैसे ये एयर इस बॉटल में जाएगा वैसे वैसे ही हमारा ग्लास वाटर से फिल होता जाएगा। थैंक यू। Good evening, ma'am. My name is Kanishka and I am from 8th standard. Today I am doing an experiment of science. My experiment is air exerts pressure on water. As you can see, I have taken one half-filled water bottle, a glass, a straw and a balloon. As you can see, I have made a hole in this bottle and passed the pipe through it. Then I will fill air in this balloon. As you can see, I have filled air in this balloon. Then I will cover the mouth of bottle with this balloon. As you can see, the water is coming through this pipe. This is because air exerts pressure on bottle.
This is my today's experiment. Thank you. Morning, ma'am. My name is Prisha and I study in 8th standard in Rising Stars Convent School. So today I am showing you the experiment of density. So first we have to know that what is density. Density is the weight of anything. So in this experiment, this is a very easy experiment we can do at home easily. We need 2 glasses, tap water filled in these glasses. So let's get started with our activity. In one glass, we will pour normal tap water. Remember, in these 2 glasses, we have to pour normal tap water, not cold water, nor hot water. Okay, so we have poured water in this. Now we have to take 2 lemons. In one glass, we will put 1 lemon. Now the result that comes out is the lemon sank down like this. You can see the lemon sank down because in this the weight or the density of the lemon was more heavier than the water. In this I have mixed salt. I have used common salt. You can also use common salt. So I have mixed common salt in this. Now in this the result what you will see is the lemon didn't sank down. It floats on the top. You can notice this change in these two because in this the density of the water was more heavier than the lemon. So this was my experiment on density. Thank you, ma'am.